Shine, you're mute. बोला जा रहा है बंदा। Hi guys, welcome to another episode of Football Weekly. And in the panel today we have Saugat, Shayan, and Gaurav. तो आज का segment is gonna be a little fun side of segment में होने वाला है वो आज का हमारा जो भी टॉपिक और हमारा जो पैनल है वो थोड़ा कंफ्यूजन में आएगा जब हम उनके सामने तीन प्लेयर्स के नाम रखेंगे एंड उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो उसे स्टार्ट करना चाहेंगे या बेंच करेंगे या सेल सो या बेसिकली तीन कैटेगरीज में उनको प्लेयर्स डालने हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट, सेकंड कैटेगरी बेंच एंड थर्ड कैटेगरी सेल। और सबका एक एक रीजन भी देना होगा कि व्हाई दे गोना स्टार्ट दैट प्लेयर एंड व्हाई दे गोना सेल एंड बेंच रिस्पेक्टिवली। So I'll start with the first slot which I have. Uh, Ederson, Emi Martinez, and Ter Stegen. I'll start with Sogat. तुम बताओ start with Sogat and then we'll go line wise Gaurav and Shayan. I'll The players are Ederson, Emi Martinez, and Ter Stegen. I'll start Emmy. I'll bench Ter Stegen. I'll sell Ederson. Okay, reason? So again, पिछले बार में भी जब बातचीत चल रही थी कि गोलकीपिंग में कौन रहना चाहिए स्टार्टिंग 11 में, तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा था एमी कैन प्ले अ गेम दैट सूट्स मोर और लेस टू बोथ द टाइप ऑफ प्लेस, या लॉन्ग बॉल, काफी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, हाई प्रेसिंग फुटबॉल, या फिर एक होल्डिंग पोजीशन फुटबॉल, दोनों में ही कैन प्ले द 50-50 पार्ट। ठीक है। So want to plus he has that amazing mentality psych where you can, if you go to penalties or if you have a penalty conceded, plus if you want a leadership in the D box, he can provide you that. So that's extra plus 2-3 brownie points that he gives you. Ter Stegen, Ter Stegen I will bench, ठीक है, because between Ederson and Ter Stegen I prefer Ter Stegen personally, ठीक है. I feel his Little हाँ biasness type का थोड़ा सा है। हाँ बिल्कुल बायसनेस है, ठीक है। प्लस हिज शॉट स्टॉपिंग इज अ लिटिल बेटर देन एडरसन व्हाट आई फील, ठीक है। शॉट स्टॉपिंग एंड क्रिएट एंड पासिंग preciseness that I see in his pass, that is way, that is a little better. And I'll bench sell Ederson because that is the three options. Yeah. Cool. Gaurav? हाँ मेरे लिए बस वही चेंज रहेगा टेस्ट अगेंस्ट स्टार्ट्स एंड मार्टिनेज बेंच और एडरसन सो वेरी सेम रीजंस पर द स्वैप बिकॉज टेस्ट अगेन ने काफी एक अच्छा अपना लालीगा निकाला है पिछला वाला और ही वाज द बैकबोन ऑफ द डिफेंस जो कि डिफेंस इतनी अच्छी दिखी है लास्ट सीजन। अगर कोई एक बंदा क्रेडिट देना है तो आई वुड गिव इट टू टर स्टेगन और काफी साल से बार्सिलोना का पोस्ट के बीच रहा है एंड कैप्टन ऑल्सो ऑफ द टीम। So for me, he starts or Ederson again or Emiliano Martinez पे ऐसा reason दिया स्वागत same the attitude and हाँ everything is very good. So सही हाँ है। शायद Start कि Ter Stegen, I'll bench Emi Martinez and I'll sell Ederson. देखो Ederson के बारे में ये है कि I do not watch a lot of Man City, ठीक है। I'll be honest, I do not watch Man City a lot. पर कोई मेरे को एक मैच या कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ जहां he put in a extremely like world class performance और मैन सिटी उसके बल पे जीता हो गेम। मतलब कोई बड़ा लेवल का गेम, ऐसा नहीं कि कोई रेलीगेशन टीम याद के नहीं अगेंस्ट 3-4 सेव कर दिया। याद नहीं है। मतलब वही ये सेम काफी रेयर होता है कि लेकिन सिटी कंसीड्स अ लॉट ऑफ गोल्स, बट द टाइम व्हेन दे लूज फ्रॉम द चैंपियंस लीग मैचेस, तब अगर एडरसन ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखा पाता तो मे बी ही वुड हैव बीन इन द कन्वर्सेशन। मतलब देखो एमी मार्टिनेज का तो सबको याद है, एक ही साल में वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल में जो सेव किया था कोलुमोनी पे। हाँ, फिर टर स्टेगन पिछले ही सीजन कैरी किया बार्सिलोना को इतना लंबा, उसके बिना देखो इस सीजन क्या हो रहा है। तो ठीक है, यही सही है, मेरे को यही ऑर्डर सही लग रहा। मे आई हैव टर स्टेगन ओवर एमी मार्टिनेज बिकॉज टर स्टेगन हैज बीन एट द टॉप लेवल, प्लेइंग एट द टॉप लेवल क्लब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि एमी मार्टिनेज के पास नहीं। उसके पास नेशनल लेवल एक्सपीरियंस ही इज शोन कि ठीक है वो काफी अच्छा कीपर है, पर एट द क्लब लेवल आई विल गो विद द प्रूवन गोलकीपर।
ठीक है, तो मूविंग अहेड, ये तुम लोग के लिए काफी टफ होने वाला है। आई आई थिंक कि थोड़ा बायसेस आ सकता है इस सेगमेंट में। मिलिटाओ, अराहो एंड सलीबा। I'll start with Shayan this time. बताओ Shayan. Militao starts, Araujo on the bench, and Saliba sold. Reason? देखो, मिलिटाओ ऑन हिज डे, देखो सब यार, बात ये है कि मिलिटाओ ऑन हिज डे इज इजीली लाइक टॉप 2 सेंटर बैक इन द वर्ल्ड, बट उसके साथ दिक्कत क्या है कि उसके साथ ऐसा ऐसा लैप्सेस इन कंसंट्रेशन है, लेकिन थैंकफुली वो सब छोटे गेम्स में होता है। और अराहो अभी तो भाई, ही हैज बीन लाइक, क्या बोलूं, ही हैज बीन Rock solid. शॉकिंग, शॉकिंग टू से द लीस्ट। एल क्लासिको में, फिर अभी बारसा के पिछले कुछ गेम्स में, ही हैज बीन शॉकिंग। तो फॉर नाउ अराउjo नहीं, अराउjo बेंच पे। अब मिलिटाओ इज अ वेरी टॉप क्वालिटी सेंटर बैक। तो आई हैव मिलिटाओ, आई बेंच अराउjo, आई सेल सलीबा। Cool. Gaurav? हम्म। ये तो रोनाल्ड अराउंड स्टार्ट्स, मिलिटाओ बेंच, सलीबा सेल। मेरे लिए रोनाल्ड अराउंड, आई एग्री कि उतना अच्छा नहीं जा रहा है सीजन उसका, पर इस लिस्ट में, एटलीस्ट इस लिस्ट में तो रोनाल्ड अराउंड, आई सी हिम बीइंग इजीली द हाँ, बेटर सेंटर बैक किसी भी मामले में, मतलब इवन पोजेशन अटैकिंग, अगर उस बॉल कैरिंग अगर रखना है तो ही डज दैट। but मिस्टेक्स हो रहे हैं Saliba काफी, also has been quite exceptional. You guys are neglecting him. अग्रीड, पर लेवल्स अपार्ट। और ऑल्सो रिसेंटली सलीबा इज समवन जिस पे बहुत ध्यान जा रहा है, पर True. दीज गाइस लीडर ऑफ द डिफेंस, एटलीस्ट रोनाल्ड अराउंड। फॉर मी ही स्टार्ट्स, मिलिटा ये और सलीबा गोल। Sagat? Same. Araujo starts, Militao on the bench, and Saliba sell. क्योंकि so हाँ, one more reason which I have is कि Militao has to work with players, and again जो पिछले पॉडकास्ट से मैं थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करूंगा कि as गौरव said कि मैड्रिड का टीम is in काफी डिपार्टमेंट बेटर देन बार्सा's टीम करंट प्रोसेस, ठीक है। तो उन लोग का जो स्ट्रक्चर है, काफी काफी कंफर्टेबली गेम्स चल रही है, काफी कंफर्टेबली दे हैव डन थिंग्स, ठीक है। जबकि आवर डिफेंस हैज बीन डिजास्टरस, डिजास्टरस मतलब टू से द लीस्ट, ठीक है। somehow our midfield manages it, scores a goal, but our defense has been disastrous. But ever since Araujo's presence in the defense, Barcelona's defense has felt quite comfortable, quite safe, apart from the recent one or two bad phases of his performances. Barcelona's defense has felt quite safe whenever Araujo is in center back position. Even in big matches, he has played his part, although the goals have gone in. But हाँ, impact wise, Araujo has given a better impact at Barcelona. So that is my only reason, nothing else. cool, cool. था थोड़ा सा बायस लगा मेरे को, बट ठीक है, मतलब properly justified by both of the, by all three Like, in fact. Bench Moving Militao, to same, sell same, Salim. same. Just because मेरे पास वही दो Moving ahead. Next slot comes with Haaland, Mbappe, and Harry Kane. Oof. hmm. Sagat? I will go for Kane. Start Kane, bench Haaland. Are we talking about striking position or are we मतलब striking position का ही बात हो रहा है ना? In general, like no, no, in general, like you So have three if players we are and you talking ask about by your board to if start we are and then talking bench. about wing, I would prefer Mbappe on the wing, narrow winger. But if you're talking about the striker position, I will prefer Harry Kane, bench Haaland, and sell Mbappe. And what's the reason Uh, behind अगेन Haaland एम्बाप्पे and फिनोमिनल टैलेंट, मैं सेल से शुरू करता हूँ, फिनोमिनल टैलेंट, ठीक है। बट व्हेन अ स्ट्राइकिंग पोजीशन कम्स इन, आई रियली वांट अ पर्सन हु कैन होल्ड द बॉल, हु कैन हैज अ एरियल एडवांटेज ओवर द डिफेंडर्स, ठीक है। हु कैन क्रिएट अ गेम। एम्बाप्पे में मेरे को क्रिएटिंग या फिर पासिंग या होल्डिंग द बॉल नहीं दिखता है।
Although great talent, I mean, once a generation talent, whatever he did in the World Cup, whatever he does in the Liga, even in the Madrid game where they got this, Madrid defeated them. Mbappe was another level, playing at another whole another level. कोर्टुआ को वो कटा के वो गोल मार रहा था. But still, when it comes to topic of Mhm. striker, I want a person like Harry Kane who can come behind, who can hold the ball, who can help his teammates make the runs, who can give assists, who can provide a leadership. Mbappe में leadership भी नहीं है, captaincy भी नहीं. And when it comes to Haaland, Haaland can do a little bit more than a little bit less what Harry Kane does. But Mbappe में मेरे को सिर्फ फिनिशिंग दिखता है, या फिर एक प्लेयर को अट्रैक्ट करने का वो दिखता है कि दो डिफेंडर्स खींच लेगा वो. Cool. Gaurav, Hey, Mbappe starts, Kane starts on the bench, and Haaland is sold. The only reason that I'm taking for Mbappe is because the things that he can do with the ball, with the ball, is something that can't be done by either of these two, Kane and Haaland. The way he can dribble past many players because of his raw pace, obviously, but with the ball, the way he can get into spaces and also shooting. Matlab, there is one thing that Kane and Haaland brings into the picture, which is their ultimate finishing and shooting. But Mbappe has it all for me. The ball control as well as the capability to attract defenders and get into the spaces, the actual attacking third when it matters the most. The we have actually seen him doing that, like in the World Cup games as well. The Mhm. most clutch player recently in world football, in international football, to me at least. The way he's able to bring in those goals without when his team is actually completely backed against the wall. So for me, that's a very good thing to have in any team. So for me, Mbappe starts between Haaland and Kane. Kane has proven himself year after year. So for me, Haaland has a lot to prove yet. Nice. Shayan, decision बना लिया? Hmm. Yeah, so काफी टफ है यार. I like all three players. ठीक है. Yeah, exactly. But I'll start Mbappe. I'll bench Haaland and I'll sell Kane. I'll give you the reason. मेरे से, like, if I'm picking a team, regardless of how talented Harry Kane is, I just cannot take him over a guy who has scored in two World Cup finals, who has won one World Cup, and he also scored a hat trick in the other one, and a guy who won the treble over a guy who's never won a single trophy in his life. I, Just because of the cannot, mentality तो क्या है ना? I cannot do that. So Mbappe starts for me. Mbappe for me is like, agar if you are in a tight spot and you need a player to get you out of it, Mbappe is your guy. Okay, he showed it in the World Cup final as well. Haaland for me because like agar if you're bringing someone off the bench, ठीक है, ये एक और चीज है apart from the trophy aspect. If you're bringing someone off the bench, Haaland will have a much bigger impact off the bench than Kane, like given the age and stuff. So Kane right now is not that explosive kind of striker who will bring in the pace and stuff to actually run at defenses. So for me, Haaland will be on the bench and I'll sell Kane. काफी इंटरेस्टिंग स्पॉट था बिकॉज तुम तीनों के साइड से हमको मतलब तीनों के डिफरेंट ओपिनियंस थे एंड सबके अच्छे प्रॉपर रीजन भी थे. तो ये स्लॉट भी आई गेस थोड़ा सा टफ हो सकता है एक पोजीशन पे. साला, साका एंड बर्नार्डो सिल्वा. This time I'll start with Gaurav. You have Salah, then you have Saka, and then you have Bernardo Silva. All three prem guys. I'll start with Salah. I'll bench Bernardo Silva, and I'll have to sell Saka as of now. Uh, the amount of football these guys have played is the only reason that I'm going for it. Saka is showing exceptional talent in every game that he's playing, in every game that he's playing for the national team as well as the club.
but he's again the same case as Haaland. He has got still a lot of things to prove, to me at least. Salah has proven it year after year again, and is still the most lethal right wing player actively playing football. He can cut in, he can provide you with the crosses, he can be in the box when the crosses are arriving from the other end. And I am very sure that he will be accumulating the most XG amongst the three as well. So for me, Salah starts. Bernardo Silva, great player. Uh, although, गलत पोजीशन पे उसको डाल रहे हो तुम. हाँ, एकदम out and out right winger, not a player who can hug the touchline and give you that thing. But the things that he can do in the interior is something that none of the players that I've seen even come close to. The ones that are actually playing right now. He's at the Messi level for me, at least in the touches and the dribbling and the way he can set the ball into the box and provide to the attackers. For me, he comes a very close second to Salah. And then Saka is miles apart from these two for me as of now. So yes, for me that's the thing. Cool, cool, cool. Soviet. Your take, buddy? स्टार्ट्स. ठीक है, बिकॉज ही इज एन आउट एंड आउट हाँ, राइट विंग. और जैसे गैरी नेविल ने बोला था रोनाल्डो के लिए, ही कैन स्कोर इट विद लेफ्ट फुट, ही कैन स्कोर विद राइट फुट, एंड इवन नथिंग ही कैन स्कोर इट हाँ, विद हेड. साला लिटरली डज दैट फॉर लिवरपूल इन द राइट विंग. ठीक है, ही स्कोर्स फ्रॉम एवरी पोजीशन. नूनेस को कितना असिस्ट दिया, जो उसका आई थिंक डबल होता उसका असिस्ट में टाली साला का. तो एंड द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ही वाज इन लिवरपूल, वो तुम पागल कर दिया था. द क्लोज नेट ड्रिबलिंग वाज जस्ट मार्वेलस. प्लस हिज इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ फुटबॉल वाज आल्सो वेरी कमेंडेबल. So yeah, true. when Bernardo Silva bench, again, very wrong place you're putting Bernardo Silva. He is one of the world's best players in the midfield. ठीक है, but because उसको वो पेप का टीम में है तो उसको हर जगह खेलना पड़ रहा है. हाँ, कभी फुल बैक भी खेल रहा है और कभी वो राइट विंग भी खेल रहा है. ठीक है, but I really want him to be in the midfield where he thrives, and he's a like world class player. और साका, मे बी इट इज माई ओपिनियन, बट आई फील ही इज अ मतलब बहुत वन डी काम कर रहा है फॉर आर्सेनल. मे बी फॉर आर्टेटा का उसका इंस्ट्रक्शंस है. ही जस्ट हग्स द हाँ. साइड एंड ही comes inside, he tries to take on one or two plays. I want to see more from Saka. I want to see him control the game a lot more. समझे. शायन. Same. Salah starts, Bernardo Silva on the bench, and Saka sold, because like again like it is an unfair comparison, I would say, because you're comparing two very experienced players with a youngster who's just like starting off his career. तो उस रीजन से पर Salah has proved himself in the Premier League, in the Champions League. He's won the Champions League, he's won the Premier League. बंदा consistently perform कर रहा है लिवरपूल के लिए कम से कम 5-6 साल से, and he has been like one of the world's best players in that time as well. Bernardo Silva, to me, like यार, I am a Portugal fan. मैं पोर्टुगल के लिए खेलते हुए देखता हूँ उस बंदे को, और उसको फिर सिटी के लिए खेलते हुए देखता हूँ. अब जमीन आसमान का फर्क रहता है यार, बट स्टिल ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. बर्नार्डो सिल्वा इज अ वेरी गुड प्लेयर, क्लब लेवल पे तो खासकर काफी अच्छा है. और आई वोंट अग्री विद गौरव कि मेसी लेवल पे है वो क्योंकि इवन एज अ रोनाल्डो फैन मेरे को मेसी के लिए डिसरिस्पेक्ट फील हुआ भाई. ठीक है, बट स्टिल ही इज अ गुड प्लेयर एंड आई हैव हिम ऑन द बेंच. Cool, cool. ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट पे चलता है. In next slot we have Oblak, Donnarumma and Ramsdale. शायन तू ही बता. यार आर्सेनल ओब्लाक. फैंस मेरे को लग रहा है बहुत सुनाने वाले हैं, बट स्टिल ओब्लाक. Oblak ये starts ये undisputedly. ये क्या ये सस्पेक्ट कौन है बीच में ये? तू भाई एक बात बता, तू आर्सेनल फैंस को ऐसे प्लेयर्स का ग्रुप ही क्यों कर रहे हो जिसमें वो बाहर जाए? आई डू नॉट लाइक राया, मुझे राया डिसेंट गोलकीपर नहीं लगता, बट ही इज बेंचिंग रामसडेल. तो फिर क्या ही कंपैरिजन है फिर? फिर आई मतलब एक लाइक इजी पिक भी होता Donnarumma. है एक टाइम पे आई रेटेड Donnarumma very highly, but after that he's dropped his level, he's fallen off a little bit, पीएसजी but मूव, still I think like आफ्टर द I'll have पीएसजी. Donnarumma over Ramsdale definitely. So Oblak starts undisputedly.
उसके बाद फिर डोनारुमा एंड देन क्या बोलते तेरा रैम्सडेल। Ramsdale. Yeah. Gaurav. Same for me. Oblak starts. Second bench पे Donnarumma and Ramsdale is sold. For me, Oblak has been a generational talent. At a time, once he was like there was Buffon. Once he retired, for me, it was Oblak. It was not Manuel Neuer at any point of time. Oblak was doing very well. Uh, because इतने ज्यादा शॉट्स आ रहे थे उसके गोल पोस्ट पे तो गोल्स कंसीड हो रहे थे but his technique is really really different. Like we see Italian goalkeepers, we see German goalkeepers, they have their techniques, but इसका technique is very different. इसका positioning in one-on-one situations in shot stopping is really really good. That is something that I've really liked about him. Uh, I've only seen Buffon having these traits, and when I see Oblak in his black gloves, it's really something that's scary for me as a striker if I'm playing. So for me, Oblak starts. Okay. And Sogat. Same thing. The reasons are very clear. Oblak has been a very loyal servant to Atletico Madrid for all these years. I mean, he could have gone to the best teams in Premier League as a goalkeeper. और एक goalkeeper आपका stagnant रहना for year after year is a very fulfilling thing, very satisfying thing for yourself. Because आपको पता है कि आपको कैसा गेम खेलना है. अगर आपको पता है आपके between the nets कौन है. Plus his injuries record is very low. ठीक है. ही हैज अ वेरी मतलब मिस्टेक एरर प्रोन एक दो अभी छोड़ के एरर प्रोननेस काफी कम है. रैम्सडेल अगेन डजंट कम इन दिस कंपैरिजन. ठीक है बिकॉज एक है आपका इटली का नंबर वन गोलकीपर यूरो जीता है, एक है एथलेटिको मैड्रिड का मेन गोलकीपर. ठीक है. और एक है एरन रैम्सडेल जो इंग्लैंड के लिए भी नहीं खेलता है. सो डेफिनेट सेल. हाँ. Donnarumma, I had a huge respect for him in AC Milan. ठीक है. Huge respect for his Italy campaign where he won the Euros. ठीक है. But ever since PSG, every player who goes to PSG comes just doesn't come out in a good light ever since they go to PSG. And so happened with him as well. So bench Cool. Donnarumma. यार भाई तू I शाश्वत तू mean, लड़के आया है क्या किसी आर्सेनल फैन से? नहीं नहीं नहीं. बकेटिंग तुम बकेटिंग ही वैसा बना रहा है भाई. कहाँ बर्नार्डो सिल्वा साला साका. अब नेक्स्ट स्लॉट है वो डेफिनेटली मतलब टफ होगा तुम लोग के लिए 100%. तो नेक्स्ट स्लॉट में वी हैव विनीसियस जूनियर, ह्यूमन सन एंड जाओ फिलिक्स. तो आई विल स्टार्ट विद गौरव दिस वन. Starts Heung-min Son on the bench, Felix sold. It's a very clear. Like it can't be more clear than this. It's daylight difference between all of these players. To be honest, Vinicius Junior, the thing that he can do on that left wing is something that's bar to none as of now in world football. I would say Heung-min Son does bring in some traits that none of these two players have, but still, for a winger, for a left winger, the qualities that Vinicius Junior brings on the table, and the fact that he can also play in strike two positions when there are two strikers is also addition to it. Also, he can agitate the opponent players and the coaches, so that is also a good thing. Uske baad, Felix does not come into this debate for me ever. Uh, uh, Again, it's and pieces player, like he'll deliver some very good moments in a match, but even as a bar of now, I can't pinpoint one particular game and say that he has made all the right decisions when he has had the ball. So I can't take him over any of these players. Firstly, I thought of putting Griezmann. So would Griezmann be a good comparison if he comes in the debate Might be a between second, Son and a close second, but Vinicius starts. cool. Saugat. Um, so of course Felix sell. ठीक है because huge talent, huge talent. ठीक है but fruition पे नहीं आ पाया है. ठीक है.
वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया टू अ डिपेंडेबल प्लेयर, टू अ bankable player, to a player who coaches can trust on. But huge talent. I would bench Vinicius and I would start Heung-min Son. Personal biasness इसमें, ठीक है, because Son, what he has done for Tottenham, ठीक है, with the Tottenham team is really really commendable. And he has a mix of abilities that makes him a kind of perfect winger. If I were ever to make a dream team, or if I were ever to m- make a choice over Vinicius, I would place him Son and I would bench Vinicius. Cheyenne, your take? Hmm. I'll start Vinny. I'll bench Son and I'll sell Felix. Sell Felix का बात बताता हूँ मैं क्यों क्यों रीजन देता हूँ उसके पीछे, ठीक है. Because if you have like a superstar level player, ठीक है, who has got like potential to be one of the world's best, या फिर वो promising भी है, at the very least सिर्फ promising भी है, and you have bought him for 100 million, you do not loan him out to your direct rival, which Atletico Madrid did. True, true, Never. true, true. अगर रियल मैड्रिड विनीसियस या एंड्रिक या रोड्रिगो को कभी करेगा लोन बारसा या एटलेटिको, कभी नहीं. रिलेशनशिप खराब है, लेकिन अगर रिलेशनशिप खराब नहीं होता तब भी नहीं करता. और प्लस विनी डेफिनेटली मोर टैलेंटेड देन सोन, बट इट डिपेंड्स. विनी का किसी किसी गेम में माइंड रहता नहीं है गेम में. तो अगर वैसा कोई इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर वाला स्टेडियम है, ठीक है, जैसे एटलेटिको का था इस हफ्ते, जहां विनीसियस गेम छोड़ करके बाकी सब कुछ किया फील्ड पे, खेलना छोड़ करके सब कुछ किया वो फील्ड पे. डेपॉल से लड़ा, सिमियोने से लड़ा, दो तीन चीज, ये तो हाईलाइट हुआ. वो आई एम प्रीटी श्योर कि वो चार पांच लोग से और लड़ा होगा. तो उस वजह से, अरे मेन बात है कि उस वजह से रियल मैड्रिड हार गई. उस बंदे को रियलाइज नहीं होता है कि टीम कितना डिपेंडेंट है उसके ऊपर, और वो यही सब चुतियाप करने में लगा रहता है गेम में, जिसकी वजह से वो अब खेलना बंद कर देता है एक तरह से. वो खेलना बंद करता है तो पूरा अटैक सफर करता है ना, क्योंकि रोड्रिगो रोड्रिगो इज डिपेंडेंट ऑन हिम, कि मुझे कोई बंदा चाहिए पास करने के लिए, या फिर कोई बंदा मुझे मुझे पास करे. बेलिंगम होल्ड्स देम टुगेदर, और वो बंदा भाई वो अपना गेम छोड़ करके सिमियोने से लड़ रहा है, क्राउड से लड़ रहा है. तो अगर वैसा कोई इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर वाला गेम है तो आई स्टार्ट सोन, क्योंकि वो बंदा मैच्योर्ड, ही इज लाइक अ टोटली क्लासी मैच्योर्ड प्लेयर, तो उसको वो एटमॉस्फेयर उतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना विनीसियस को करेगा. बट And स्टिल ऑन बेसिस ऑफ टैलेंट विनीसियस इज वेरी क्लियर, सो इसलिए विनी. what बट एटीट्यूड पे भाई दिक्कत है. Son what did for his country as a team, and the number of sacrifice and determination it took for an Asian player to reach to this level is amazing. And मतलब उसका mental agility, mental वो बहुत है, strength बहुत है, more than Vinicius. Like Vinicius may crumble, talent huge, विनीसियस में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है बस. टैलेंट ह्यूज विनी, ठीक है, वन ऑन वन कॉम्बिनेशन विनी का टैलेंट ह्यूज है, ठीक है, ब्राजीलियन जीन्स भाई, ब्राजीलियन जीन्स, मतलब टू गुड टू गुड. बट आई नीड अ पर्सन हु कैन सफर मोर देन टैलेंट मोर. Although I like to clarify that when I say Vinicius does not have mental strength, I'm speaking like he cannot actually control his emotions. उस सेंस में कि he does not have mental strength, but लेकिन वो बंदे में in terms of like attitude और तुम्हारा जो एक you need a bit of perseverance to be successful at the top level, especially when you're not doing well, like he was not doing well under like in the 2019, 2020, 2021, ये सब सीजन्स में वो टीम में था, खेल रहा था कंसिस्टेंटली, बट एक से एक डिजास्टर, मतलब फिनिशेस मिस कर देता था, टैप इन मिस कर देता था, तो और उसमें बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था उसको. लेकिन टू कम बैक फ्रॉम दैट एंड एक्चुअली बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, दैट रिक्वायर्स अ गुड लाइक अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ. बट उसके अंदर इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आता उसको. जहां उसको कोई जरा सा भी मतलब चाहता है, ही इज आउट ऑफ द गेम सीधे. तुम एक बार उसको एक टैकल करो, उसको तीन चार बात बोल दो, उसके बाद इज आउट ऑफ द गेम. ठीक तो है, ये वीकनेस है बस उसमें. ठीक है, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट, जो अगला स्लॉट है वो भी तुम लोग के लिए टफ हो सकता है. आई फील कि टफ होगा, आई फील कि टफ होगा, बट ये जो स्लॉट था उसको भी मैंने सोचा था कि काफी टफ होगा, बट काफी क्लियर हो गया. So I'll list the players: Ruben Dias, Virgil van Dijk,
and Antonio Rudiger. So who wanna start? कोई भी start कर सकता है. I'll give you guys a heads up. किसको जाना है? I'll start Virgil van Dijk. I'll bench Anthony Rudiger. I'll sell Ruben Diaz. For me, Virgil van Dijk, first of all, he's the only defender that has come so close in this 21st century to the Ballon d'Or, and there is a reason for that. I know that that season was something that people may call it as a one-season wonder for him because after that he has dipped a lot. He has dipped a lot, but in this particular season that we are seeing, witnessing as of now, he has been the pillar of this defense as well. Liverpool has conceded the least number of goals this time in the Premier League, and he has been there every time, all the games. So for a player to actually dribble past him has been a difficult task for every player in Premier League with the talent of these attackers that other teams bring in. For me, Virgil van Dijk is on the top. Antonio Rudiger comes a very close second because the beast mode that he has, that we have witnessed throughout, at least in this very short period of time where he has played for Madrid, even before that as well. But let's specifically talk about the Madrid time. The way he can contribute to the attack as well is something that adds on a lot to his whole arsenal of defending capabilities for me. On the ball, very good player. Tackling is something that he can work upon, but that's also at a very good level for me. Ruben Diaz, again, someone who peaked and has dipped a lot, a lot. For me, he must be sold amongst the three. Hmm. Cheyenne? Okay, I'll start Rudiger. I'll bench Van Dijk and I'll sell Ruben Diaz. अब उसका रीजन ये है कि देखो रूडिगर आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ रूडिगर एवर सिंस हिज चेल्सी डेज ठीक है आई नेवर थॉट दैट आई सी वॉच हिम प्ले एट रियल मैड्रिड और कम टू रियल मैड्रिड वो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया रियल मैड्रिड स्नैप्ड हिम अप I never thought he will come to Real Madrid, but I was a huge fan of Rudiger ever since like his Chelsea days. Um, physically, what I feel is Rudiger physically काफी strong है, पेसी बहुत है. I do not know if you guys have noticed it or not. Rudiger का पेस जबरदस्त है. कोई भी उसको लाइक पेस पे बीट नहीं कर पाता है ठीक है प्लस ही इज वेरी सिक्योर बट बात वो है कि ही नीड्स अ गुड सेंटर बैक पार्टनर रियल मैड्रिड में भी दिक्कत क्या हो रहा है कि ही हैज बीन प्लेइंग वेल नाचो जैसे कल कल ही वाला गेम था नाचो गिव अवे 2 गोल्स सीधा मतलब पूरा उसी की गलती था दोनों जो ये सॉरी एल से बोल रहे हैं ये अल्मेरिया अल्मेरिया का जो दोनों स्टार्टिंग का पहला हाफ का गोल दिया वो नाचो की गलती से गया रूडिगर हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल और ही हैज वन द चैंपियंस लीग ठीक है पहले तो चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीता जिसमें आई थिंक कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेवल का परफॉर्मेंस था उसका मतलब डिब्रोइना को इंजर किया वो ठीक है लेकिन उसके उसके बावजूद भी और भी बहुत सारा कुछ था भाई बहुत अच्छा डिफेंडिंग किया वो ठीक है आई विल स्टार्ट रूडिगर बिकॉज वैन डाइक हैज नॉट बीन एज कंसिस्टेंट एज रूडिगर वैन डाइक हैड लाइक अ वेरी गुड सीजन जो लाइक एकदम बैलोन डोर पे सेकंड आ गया वो बट आफ्टर दैट ही इज फॉलन ऑफ मैसिवली और मतलब एक सीजन आई एम फॉरगेटिंग विच सीजन जिसमें वो बंदा बहुत गंदा फ्लॉप किया था सो बात है कि if you want to separate the elite players with like great players ये कंसिस्टेंसी वाला चीज आता है यू लुक एट मेसी एंड रोनाल्डो ओवर देयर करियर्स लाइक 15-16 इयर्स जब वो पीक पे थे कभी भी एक भी फ्लॉप सीजन नहीं गया यू लुक एट ईडन हजार्ड एक सीजन था ना जिसने वो प्रीमियर लीग एक गोल भी नहीं मारा था so this is what separates like the elite players from great players so in that sense I think Rudiger is like at the elite level और रूबेन डियाज के साथ बात ये भाई वो उसको सिटी के सिस्टम से निकालो और वो बंदा एकदम अलग ही प्लेयर बन जाता है लाइक द Okay. डिफरेंस इज Wow. नाइट एंड डे ये सिटी के हर प्लेयर के साथ होता है पता नहीं भाई ग्वार्डियोला कितना बड़ा मास्टर टैक्टिशियन है किसी को वो भी भाई वो पोर्टुगल मतलब वाले के साथ क्या? हाँ मतलब देखो मतलब वही कि मेनली बाकी लोग नहीं जानते होंगे बट आई एम अ पोर्टुगल फैन रोनाल्डो फैन सो आई वॉच पोर्टुगल एज वेल और द डिफरेंस इज नाइट एंड डे जब पोर्टुगल एलिमिनेट हुआ 2021 यूरोस जो कि एक्चुअली वाज कॉल्ड 2020 यूरोस फॉर सम रीजन ठीक है टू 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 तो उसमें बेल्जियम के अगेंस्ट पोर्टुगल बाहर गई थी भाई लुकाकू लेटा लेटा के खत्म कर दिया था रूबेन डियाज को उस गेम में जब दौड़ रहा था रन कर रहा था डिफेंस पे रूबेन डियाज लेटा हुआ है जमीन पे तो
वो भाई तुम क्लब से निकल के बाहर भी कुछ परफॉर्म करो तब माना जाएगा कि तुम हो एक्चुअल में। मैन सिटी में तो मतलब खराब से खराब प्लेयर भी परफॉर्म कर ले, वो गॉर्डियोला के अंडर इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के। Cool, cool. Swagat, I'm Abhi, very Swagat. crossroads here because I can I can bench any, मतलब Rudiger or Van Dijk. I feel are at the same level. ठीक है. Even I've seen Rudiger having bad seasons also before he came to Madrid. ठीक है. Same as Van Dijk has having bad seasons. Rudiger constantly ऐसे चेल्सी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. ठीक है. So Abhi sold हुआ. हाँ, नहीं नहीं, whatever it is, so I can, मतलब I really don't know who to bench, who to start, but definitely Ruben Dias sell, ठीक है, as all the reasons mentioned hence, but very good play for Man City, but take it out of the system, he's just a normal Portugal defender named Ruben Dias. Cool. Cool. Okay, so now we'll move to the last slot. Uh, I hope कि ये टफ हो जाए जैसे एक हुआ था. Uh, इसमें लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं अल्फोंसो डेवियस, Theo Hernandez, and Achraf Hakimi. So I'll start with Shahid. Sure. I don't know for some reason because two of the guys are Madrid Academy players or kind of Madrid players. So I'll start with Shahid. Okay, I'll sell अशरफ हकीमी सबसे पहले तो. Between Alfonso Davies and Theo Hernandez, it is kind of difficult. Hmm. This is difficult. Alfonso Davies और Theo Hernandez में. अरे यार. Okay, I'll start Theo Hernandez and I'll bench Alfonso Davies. Specific reason? यार मतलब रीजन देखो वही दोनों ही काफी अच्छे प्लेयर्स है, दोनों के स्ट्रेंथ्स भी काफी सिमिलर है कि ड्रिबलिंग अच्छा है, पेस अच्छा है. तो इन टर्म्स ऑफ, बस मैं ये बोलूंगा कि इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड चैलेंज, बीइंग चैलेंज्ड, एक्चुअली चैलेंज्ड एंड बीइंग द बैकबोन ऑफ द टीम, थियो हर्नांडेज हैज अचीव्ड दैट. राइट नाउ ही इज वन ऑफ लाइक द की प्लेयर्स ऑफ मिलान. Alfonso Davies will definitely get there, but abhi for now I think like Bayern can replace him if they want, or if they try. Theo Hernandez has become a backbone of Milan. अगर वो छोड़ेगा तो मिलान को मतलब झटका लगेगा. अल्फोंसो डेविस को रिप्लेस कर लेगा अभी बायर्न, बिकॉज आई थिंक कि क्योंकि अल्फोंसो डेविस के साथ एक और चीज है कि बीच में उसको इंजरीज वगैरह भी बहुत हुई थी. सो फिटनेस लेवल की वजह से भी काफी टाइम उसका लाइक प्लेइंग फील्ड से हटा हुआ है. और सिमिलरली लाइक थियो हर्नांडेज वन चैंपियंस Serie A title with Milan, which is like in its own a big achievement because Milan 10 साल तक नहीं जीता था Serie A. तो उसके बाद फिर you become backbone of the team and lead the team to a Serie A title. So that commands respect. So इसलिए. But on the talent level, I think like both are pretty similar. अशरफ What about अशरफ की Hakimi? बताता हूँ मैं क्यों 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 सेल करना है भाई. ठीक है. That guy was one of the most promising fullbacks इंटर के लिए, डॉर्टमुंड के लिए. He went to PSG एंड उसके बाद फिर वो न्यूज में मेरे को सिर्फ परफॉर्मेंस या गेम के लिए नहीं आ रहा है भाई. ठीक है, डिवोर्स हुआ था उसका कोच तो उसके लिए न्यूज में था वो. फिर एम्बाप्पे के साथ कोई पार्टी वार्टी में चला गया, उसके लिए था न्यूज में वो. उसके गेम पे बात ही नहीं हो रहा. और जब भी लाइक वो जो PSG 3-0 हारी थी बर्नाब्यू में, 3-1 हारी थी, जिसमें बेंजेमा हैट्रिक मारा था जबरदस्त वाला. उसमें जो तीसरा गोल गया था PSG का पूरा बैकलाइन आगे था, एक प्लेयर ऑन साइड प्ले कर रहा था बेंजेमा को, अशरफ हकीमी. उस बंदे का डिफेंसिव लाइक अवेयरनेस बहुत खराब है. सो इफ यू हैविंग हिम एज अ फुल बैक, और अगर वो अटैक में अच्छा नहीं कर रहा तो यू आर एट अ लॉस. और प्लस वही कि वो काफी प्रॉमिसिंग फुल बैक था, पर PSG जाके सबका वही होता है भाई, ड्रॉप्ड ऑफ टोटली. True. PSG. PSG and its stories. Okay. Swagat. As rightfully mentioned, PSG जाके सबका थोड़ा वो डामाडोल ले लेता है. Although I liked him a lot for Morocco in the last World Cup, Ashraf Hakimi, ठीक है, but on a club basis, on a सीजन पर सीजन बेसिस, हकीमी का सिर्फ अटैकिंग मेरे को याद रहा है. ऐसे
on a good level. I just remember him linking up with Mbappe when they're attacking, not when it comes to defense or left back responsibility. So I'll sell him. I'll start Alfonso Davis and I'll bench Theo Hernandez. I really want to see more of Theo Hernandez apart from this season. Okay. But Alfonso Davis was really crucial. Plus, I remember him a lot, especially for the Barca Bayern 8-2 thingy. But उसके बाद भी काफी I feel he has the potential to go to Madrid and become a really really like a impactful left back for the years to come. Gaurav? I'll start with Theo Hernandez. I'll have Alfonso Davis on the bench, and I'll have to select Hakimi. As mentioned by Sagar, Hakimi had a really good World Cup. The things that he was doing and the way he was leading his nation, Morocco, to wins after wins. So this was really inspirational. And also that I guess he scored the last penalty that they won the previous Spain. game. Spain. Spain won, I think. Panenka red in the middle. So yes, he had a really good World Cup, but he has performed. He's more of a right mid, मतलब जो बेल्जियम खेलता है ना हाँ मतलब राइट मिड, ही इज दैट प्लेयर हाँ जिसको जरूरत True पड़ने पे fight. पीछे आएगा, लेकिन उसको वो राइट बैक नहीं है. So yes, Theo Hernandez, one of the all-time greats of his position for me. He has accumulated the most XG amongst all these three players. For me, XG really matters. See how many goal opportunities and the total actions that you're doing that can contribute to goals for your team. Alfonso Davies, very strong defensively, the best defender amongst the three for me. Uh, the hunger that he has to win the ball again, even if he gets defeated, is really, really good. The runs that he can make for his team and the multiple ways in which he can contribute to a win for his team, both for the nation and the club, is really outstanding. So yes, Theo Hernandez, all-time great. Alfonso Davis for the defense, and Hakimi has to be sold. Fair. Cool. So that's done for the slots which I had. Although I had many more slots, but we have to take care of the time also, and we might do it in the second part, or we might come with something like the legend start cell bench. I guess that would be more interesting and engaging because अभी कोई खेल नहीं रहा है तो overall on the basis of their career वो judge होंगे rather than present form या season to season. So we'll come with that, and I hope you guys enjoyed it, and तुम लोग को भी मजा आया और थोड़ा बहुत एक दो slots में सोचने में कि किसको start किया जाए, किसको sell किया जाए, किसको bench किया जाए. Yep. So yep, guys, that's it for this video. Make sure to drop a like, comment करो यार तुम लोग, and do share. Bye bye. See you in the next podcast.